Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. So let's get started with the topic first. Today is 9th of July. The first topic is Center approves health packages for COVID controls. Second, Cabinet extend Agri infra fund to the APMC. Third, Sanofi and GSK gets nod for the phase 3 efficacy trials. The second last is Supreme Court judgment on social media platform, specifically for the Facebook. And the last is an editorial from Indian Express talking about the judicious choice. Right? This is about a collegium system and its efficacy. So these are some of the important news and editorial from today's newspaper. Apart from this, at the end of this session, there would be MCQs questions. These questions would be based on current affairs that will help you in the upcoming prelims examination. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. Starting with the first news, that is Center approve healthcare package for the COVID-19 control. This news is important for your general studies paper 2, issues related to development and management of health, right? So as we know that the government has recently increased its number, the cabinet has expanded, 2.0 expansion has made, and the new cabinet minister which has been appointed is taking some decision that can revive the economy, that can revive the healthcare sectors. So this decision is in light of that particular rule, right? So what is there in the news? What is the detail of this news? Union Health Minister, the newly appointed health minister, has recently approved and they have given a nod for 23,123 crore packages to boost the emergency healthcare infrastructure. So try to understand, they're specifically talking about the emergency healthcare fund. So emergency healthcare infrastructures ki baat kare. So here the some of the important things like ICU beds, right? ICU beds, oxygens, these things would be taken care of, and possibly what best can be done for the third wave, these things would be taken care. So this fund, which has been allocated from the Union Health Ministry, aims to boost the emergency healthcare infrastructure in the states to tackle the COVID-19, right? हर states के लिए कुछ specific allocations किए जाएंगे ताकि states अपने overall health infrastructures को boost कर सके, right? Now this packages would amplify the emergency response. Emergency response healthcare sectors में this talks about including the funding for 20,000 additional ICUs, right? India में ICU की वैसे भी कमी रही कोविड के टाइम में. So these ICUs bed is again very important. The intense care unit which was required during the second wave, we have seen the people were running short of the ICU beds, right? And the setting up of pediatric unit is also required, right? Pediatric units are all districts. So it is being anticipated that in third wave, children would be most prone, right? Some experts says we cannot predict it, but anticipations are that definitely children would be more prone, as logically we can see that children are not vaccinated as of now, right? Now the health packages that was announced recently, this is the second phase of health packages that was announced by the government of India, right? So first phase has already been announced during the tenure of Dr. Harshvardhan. So this is the second phase after the expansion. So the package include the funding of pediatrics unit. हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट जहाँ पे मोस्ट प्रोन केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, so 736 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई की गई है to set up 20,000 ICU beds and 20% of which would be hybrid, right? ये hybrid categories में बनाएगी so that the adult as well as children can both accommodated in that particular ICU beds. So this is the rationale behind the hybrid beds. बात करें पैकेजेस की, this aims to prevent the problem that was observed during the second wave. We have seen a lot of problem has arisen during the second wave of this pandemic. The first among them were the lack of transport facility, logistic problems थी oxygen को लेकर के, and the shortages of medicine, remdesivir. This sort of medicine were actually lacking, right? And from the government want that this should not happen again. And the packages would also implement from July 1st, 2021. So they have decided a date, and this would continue till 31st of March 2022. So the center shares
being 50,000 crore rupees, and the state share would be 8,123 crore rupees. So this is a bifurcation of the total fund that is being allocated under the second phase of health packages. नाउ प्रिपरेशंस की अगर बात करें गवर्नमेंट ने किस तरह से प्रिपेयर की है, स्पेसिफिकली दिस प्रिपरेशन इज मेंट फॉर थर्ड वेव एंड एनी फ्यूचर वेव दैट कैन कम टू इंडिया, राइट. सो सेंटर वुड प्रोवाइड सपोर्ट टू हॉस्पिटल्स, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, खास करके जितने भी एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, और अदर लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, institutes of national importance. They would repurpose the beds, the ICU beds, for the COVID management. Genome sequencing, that has it is evident that it has literally helped to understand the methodology and the morphology of the virus. So genome sequencing machines would also be provided to the National Center for Disease Control. So this would be also provided to NCDC so that they can enhance their level and study of the COVID-19 virus and its futures pandemic that can arise in India. Now पैकेजेस में और भी चीज़ें इंक्लूड की गई है. एक्सपेंशन की बात की गई है. नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, वी हैव सीन नेशनल टेलीमेडिसिन इज समथिंग which was regularly used by many people in the countries. E-Sanjeevani, again one of the important initiatives. Prelims point of view से भी आप इनको देख ले, कई बार questions direct पूछे जा सकते हैं. And daily consultation has increased from 50,000 to 5 lakh. So you can see the number of patients, the toll has suddenly increased because of the telemedicine and E-Sanjeevani initiatives. Now state would support to carry out at least 21.5 lakh tests a day, and 8,800 ambulances would be deployed in the states, right? So support would also be provided for the implementation of hospital management. Hospital management की जो information system in the database is something which is very important, right? Post COVID, we would require a data that will help us understand to predict any future pandemic which is occurring in the country, and to understand the data to how this actually happened and what things have devastated because of this, right? So these data management are really helpful in all district hospitals. These supports include support provided by the district hospital towards augmenting the hardware capacity. जो hospital की hardware capacity है उनको भी बढ़ाई जाएगी so that they can further enhance their level, right? So this is the aim of the government through this important packages. Now the other news, that is Cabinet extend Agri Infrastructure Fund loan to APMCs. This is important for your general studies paper 2. Government policies and intervention for the development of various sectors. What actually government decided, these all decision that is coming from the cabinet is only because there's a new cabinet minister. The cabinet has expanded. This is known as 2.0, and all the ministers they have joined, they're doing something. They have just started. They started to revamp the ministries. So the center has decided to allow state-run market yards to access the financial facilities to the agriculture infrastructure fund. जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, मैं आपको एंड में बताऊंगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है इस न्यूज़ के एंड में. सो बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली गवर्नमेंट डिड. सो व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि जो सेंटर सेक्टर स्कीम है उसकी जो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ है वुड बी अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और जो स्टेट एजेंसीज हैं और APMC है दोनों इसका इस्तेमाल कर पाएंगे. As well as Federation of Cooperative Organizations, Farm Produce Organization जिसको FPOs भी कहते हैं, FPOs and Self-Help Group. These level of entity would be benefited from this fund. Now क्या क्या advantage होंगे इस तरह के financing facilities की? Definitely during the time when COVID has devastated agriculture and many other sectors, these financial would definitely help. So ये जितने भी फार्मर्स होंगे दे वुड बी एलिजिबल फॉर द इंटरेस्ट सबवेंशंस ऑफ अप टू 2 लाख करोड़ रुपीस डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटीज. और जो APMC है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ हैं, उनको एक्सेस होगी सेपरेट लोन की विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जहाँ पे वो अपने कोल्ड स्टोरेज को बिल्ड कर पाएंगे, सिलोस, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड एसाइलिंग यूनिट्स इन द मार्केट यार्ड. सो APMC ऑल्सो नीड फाइनेंशिंग backing from the government so that they can build the infrastructures that is required for the agriculture sectors. Now decisions की बात करें, decision aims to calm the fear of protesting farmers. Such market yard are being weakened. Now if you
अंडरस्टैंड द मल्टीप्लायर इफेक्ट, इस तरह के डिसीजन के मल्टीप्लायर इफेक्ट्स क्या होते हैं। फिनेंशियली और फैसिलिटी की बात करें, ये एक्सटेंड कर दिया एडिशनली 2 years, इनको बढ़ा दिया गया फ्रॉम 2025 2026 तक। एंड ओवरऑल पीरियड की अगर बात करें इस स्कीम की, इट हैज एन एक्सटेंडेड बाय 2032 टू 2033। इनिशियली गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि 2024 तक इनको रखा जाएगा, द डेडलाइन बाय 2023 एंड 2024, बट बिकॉज ऑफ द कोविड दिस एक्सटेंशन हैज बीन एक्सटेंडेड। Now, the modification of the scheme would help to achieve the multiplier effect in generating investments. किस किस जगह पे इन्वेस्टमेंट होगी, खास करके जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो सकती है। Now, APMC market setups to provide the market linkages. As we know, APMC play a very crucial role in the states, and they provide the linkages and create an ecosystem post-harvest public infrastructure are open to farmers, right? So these entities are responsible for providing the infrastructure support to the farmers. Now, as I have told you, at the end I will be discussing about the Agriculture Infrastructure Fund. AIF क्या है? AIF एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट, जो इनेबल करती है फाइनेंसिंग फैसिलिटीज अप टू 1 लाख करोड़ रुपीस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए। जितने भी FPOs हैं, फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन FPOs को मदद करने के लिए, राइट। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स को, स्टार्टअप्स हों, एंटरप्रेन्योर्स हों एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, दीज पीपल कैन टेक फंड फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ना स्कीम प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए फैसिलिटी है, वाइवल प्रोजेक्ट्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए, कम्युनिटी फार्मिंग के लिए, इंटरेस्ट सबवेंशंस और फाइनेंशियल्स, इवन जो क्रेडिट गारंटी स्कीम्स है वो भी एप्लीकेबल है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर। Now this meant to process the storage facilities for helping farmers, FPOs, post harvest agriculture infrastructure और community assessed farming, जो community farming assets है उनके लिए भी। और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये इसके अंदर जो AIF है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर बैंक को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो लोन दे सकते हैं विद द इंटरेस्ट सबवेंशन अप टू 3% पर एनम। और नाबार्ड जो है इस एसोसिएशंस में अपनी इनिशिएटिव दिखा रही है, दे आर एसोसिएटिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर टू इंश्योर दैट ईच एंड एवरी फार्मर शुड गेट अ हेजल फ्री लोन ऑल्सो एट द इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम, राइट। तो जब भी आप मेंस के आंसर लिखें, एक होलिस्टिक आंसर लिखें, सो दैट यू आर थोरो विद द करंट दैट इज ऑन गोइंग कंटेम्प्रेरी इशूज पे आपको पता होनी चाहिए, that should be reflecting in your mains answer, right? So make sure if you're writing a mains, you should add these important points. Now, Sanofi GSK get nod for phase 3 efficacy trial. This is important for your general studies paper 2, issues related to development and management of health. So what is the news coming from the efficacy rate and the other trials? The French की फार्मास्यूटिकल कंपनी है Sanofi and its British partner GlaxoSmithKline, काफ़ी बड़ी कंपनी है, these two are the reputed company in the pharmaceutical sectors. So they have received the approval from the Drug Controller General of India. DCGI ने इनको अप्रूवल दिया है, right? So DCGI is again one of the most powerful body, apex body in terms of giving approval to any trials. फेज 3 की एफिकेसी ट्रायल्स होगी और ये जॉइंटली डेवलप्ड की इन्होंने किया है ट्रायल को कोविड-19 वैक्सीन को इंडिया में कंडक्ट करने के लिए। सो ये पहली ग्लोबल ट्रायल होगी जो इंडिया में हो रही है, राइट। सो दिस वुड बी द फर्स्ट सच ग्लोबल ट्रायल ऑफ फॉरेन कोविड-19 वैक्सीन टू बी कंडक्टेड इन इंडिया। इंडिया में हुई क्या था, जितने भी ट्रायल्स हुए थे इंडिजिनस कोवैक्सीन की तो यहाँ पे हुई है, बाकी कोविड शीट की बाहर हुई थी, यहाँ पे कुछ ट्रायल्स हमने कंडक्ट किए थे, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि फॉरेन वैक्सीन की पूरी ट्रायल्स इंडिया में होगी। और जो डबल ब्लाइंड फेज होगी फेज 3 की, दैट वुड हैव 35,000 वॉलंटियर एज बिटवीन 18 and other holders, and other sites include across the world in US, Asia, Africa and Latin America, right? तो अलग अलग कंट्रीज के अलग पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ये सर्वेज की जाती हैं, ट्रायल की जाती है, सो दैट उस एज पॉपुलेशन में किस तरह की इम्यूनिटी जनरेट होती है, दैट इज मॉनिटर एंड अगेन बीइंग इवैल्यूएटेड। नाउ साइंटिफिक जो एविडेंस हैं उनके हिसाब से जो एंटीबॉडीज हैं उसकी बीटा वेरिएंट में, डेल्टा वेरिएंट में और जितने अलग अलग वेरिएंट्स इवन देखे गए, लैम्डा वेरिएंट इज ऑल्सो देयर, द न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न, उसको भी रेस की गई है WHO के द्वारा। सो उनके ट्रांसफरेबिलिटी, उनकी इफेक्ट्स क्या है इन नए वेरिएंट में, दैट वुड बी सीन
And the design of the phase 3 study allows the evaluation of efficacy of the candidate. जो variety of circulation variants हैं, अलग अलग mutants हैं, उन पे क्या इसकी effects हैं, right? And Sanofi and GSK would also run a clinical study to assess the ability of vaccine candidate, right? जहाँ पे वो ये देखेंगे कि वैक्सीन की रिस्पॉन्स कितनी अधिक है, हाउ मच रिस्पॉन्स दे हैव शोन फ्रॉम द अदर, जो ससेसिबिलिटी है अलग अलग वेरिएंट में उस पर कैसे रिस्पॉन्स है रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ वैक्सीन इनिशियली रिसीव्ड, राइट? एंड गवर्नमेंट द साइंटिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग कि जो अलग अलग 2 वेरिएंट ऑफ वैक्सीन लिए जाएंगे तो उसकी भी क्या इफेक्ट होगी बॉडी में, उस तरह के जो इम्यूनोजेंसिटी है क्या किस तरह से क्रिएट होगी, दैट थिंग्स वुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ, राइट? 2 स्टेज की ट्रायल है बेसिकली, जो फेज 3 की जो ट्रायल हो रही है, दिस इज 2 स्टेज. वन वुड बी लुकिंग इनटू द एफिकेसी ऑफ वैक्सीन टारगेटिंग, जो ओरिजिनल कोरोना वायरस की जो वेरिएंट स्ट्रेन है D.614, ये फर्स्ट ट्रायल में इनको नोटिस की जाएगी. सेकेंड इज टू इवेल्युएट द सेकेंड फॉर्मुलेशन ऑफ टारगेटिंग द बीटा वेरिएंट. बीटा वेरिएंट इज B.1.351. So there would be 2 stages of trial, and accordingly they would understand the strains of the new COVID viruses. Phase 3 would be conducted across the diversity, जो जितने भी broad diversity है इंडिया के जोग्राफीज में या फिर और जो वर्ल्ड वाइड हो रही है वो अलाउ करेगी इवेल्युएट करने में जो वैक्सीन कैंडिडेट है उनकी एफिकेसी किस तरह से रही है सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स जो कि अभी तक नोन है साइंटिस्ट के लिए. The 2 companies would also run the clinical studies to assess the vaccine candidate कि कितनी stronger वो booster कर रही है response की, immunogenicity कितनी है, efficacy कितनी percentage में है. These thing would be again taken into consideration and the type of vaccine initially received, right? Now, the Supreme Court judgment on social media platform, again an important news where we have seen that the social media platform like Twitter and Facebook have been always reported by the court and other ministries that they are violating the rules of India. So this is in light of that only important for your general studies paper 2 is structure, organization and functions of judiciary. So what Supreme Court specifically said on its judgment while hearing a plea, a petition, we'll understand that as well. तो Supreme Court ने कहा है कि जो social media platform है Facebook, they were more focusing on Facebook. This was specifically between the Facebook. So they said कि जो यूजर की अकाउंट है इंडिया में जितने भी यूजर है 1/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो फेसबुक जो यूज करी है वो इंडिया की तरफ से, राइट? पूरे विश्व में 1/3 पॉपुलेशन ऑफ फेसबुक यूजर आर इंडियन पीपल. सो दे हैव सेड दैट दे कैन नॉट इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सिंपली स्टेटिंग दैट दे हैव नो पावर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन दे डिस्प्ले, राइट? सो Supreme Court is trying to fix the responsibility of Facebook, ensuring that they should take care of people's privacy and the right to life which is being provided under the constitution. And I personally feel mains में ये question तो permanent fix है, पूछे जाएंगे, आपके opinion ज़रूर पूछे जाएंगे. No, in both paper, in general studies paper 3 and in general studies paper 4, it is being anticipated and I expect a question can be asked in the examination. So make sure आप इसके लिए मेंस में जितने भी relevant points है वो इकट्ठे कर लें. Now the court noted that the sheer population of our country make it important destinations for the Facebook. We know that the user of Facebook is comparatively more compared to any other Western countries. So India is a hotspot destination when it's come to the overall uses of the Facebook. Now coming to the judgment by the court ने specifically कुछ चीज़ों को observe किया है. They have said that India is possibly more diverse country than any other European countries. वहाँ की local cultures, clothing, languages, regional traditions, सारी चीज़ें भिन्न है, अंतर है, diversity है, and India is a country which is known as unity in diversity, right? So again a very important point. अगर आप मेंस में आंसर लिखेंगे, make sure you use this point. This cannot be disrupted at any cost. कोर्ट ने जो जजमेंट कहा मैं आपको एक पॉइंट पर बता रहा हूँ सारी चीज़ों को. So the court has said that you cannot undermine this profession. You are a responsible company. You have to understand and you cannot ignore the lack of pivotal role that you should have in evaluating and understanding the privacy of an individual, right? So this is what the court has said in its judgment. कोर्ट ने और ये बातें कही है फेसबुक से. उन्होंने जो चैलेंज की गई थी, एक प्ली फाइल की गई थी, पिटिशन फाइल की गई थी फेसबुक और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली पीस एंड हार्मनी कमेटी है, इन दोनों की तरफ से कोर्ट ने ये जजमेंट में ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है. कोर्ट ने कहा था
जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पीस हार्मनी कमेटी है, उन्होंने जो कम्युनल राइट हुई थी दिल्ली में फरवरी 2022 में, उसके बारे में ये सारी इस कंटेक्स्ट में बातों को कहा है, राइट। Now, court has also noted some important points like Facebook has to remain accountable, accountability set करने की बात की गई है, and should trust in the vast of their powers, right? So they should understand how to control. This is their responsibility, that how they should control the out of content that is coming to their platform. And the power and potential of the social media intermediaries run across the border. It is not defined to any specific region. It has a wide range. Globally, it is being accessible. Now, multi corporations की बात करें with large wealth and influence and their command. Now, these influence extend to the populations. जो population है उनमें भी extend करती है. But the power must necessarily come with the responsibility, right? Fixing responsibility, accountability under the new IT rule was also the vision of the government. But the social media said that this is something which is curbing our right. So a debatable topic, very important topic for an analysis that can possibly be asked in the mains examination. So make sure you have a sufficient important point that you can write in the paper. Now, other editorial from the Indian Express, the judicious choice. This is important for your general studies paper 2. Again, two news important from general studies paper 2, and the section is structure, organization and function of judiciary. So this editorial is written by Dushyant Dave. He is a senior advocate of the Supreme Court and former president of the Supreme Court Bar Association. And his editorial mostly tend to come in Hindu and Indian Express, and he explains things very well. So we'll understand what he's talking about. So the entire issues that I'm going to discuss under this editorial is being categorized in 5 subheads. The first is appointment of the judges to the Supreme Court and High Court. मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं एडिटोरियल में. फिर कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कुछ बातें हैं, विल अंडरस्टैंड दैट एज वेल. जो प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट की, वो कैसे काम करती है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स, और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई थी उसकी फिजिबिलिटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, राइट. So the entire theme of this editorial is collegium system role in protecting the democracy. By democracy, I mean the efficacy of the judiciary, right? So, बात करें इंडिया, India is the largest democracy in the world, but equally it is important to preserve the democracy and freedom. We have been known, इस editorial में बात की गई है कि जितने भी हमारे national movement हुई है, we have taken independence with a long fight, with a long of sacrifice, right? So that should be understand, उस importance को समझने की ज़रूरत है. और जो हमारे constitutional institutions हैं, right, वहाँ पे जो democracy को protect करने की बातें हैं, Indian judiciary को ये समझनी होगी that we play a pivotal role in maintaining the constitutional validity, right? So the national citizen and judiciary must guard against the dilution of its independence. So it is a role of the judiciary. The judiciary play as a guardian of the constitutions. They have a role that they should protect its independence, right? And yes, there's a little doubt that judiciary is being challenged within, outside and inside. So the important point that has been discussed here is the appointment of the judges of सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. वी ऑलरेडी नो इन 1993 एक अपॉइंटमेंट की प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली कहा था कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज एन इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस है ये, राइट. पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर यू विल राइट दिस इन एग्जामिनेशन इफ अ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. तो पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस होने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल जजेस हैं पूरे पैन इंडिया में उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, या जो बेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको हाई कोर्ट में लाया जाए, राइट. सो द कोर्ट हैज सेड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन मस्ट बी वैलिड टू परफॉर्म द ड्यूटी, राइट. और ये एग्री करने की ज़रूरत है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस के लिए जो इंडिविजुअल सबसे सूटेबल है उसको प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए, राइट. And the court has held that no such appointment can be made unless it is conferred by the opinion of CGI, that is Chief Justice of India. So the opinion of CGI become pivotal, and he should have all the final stake in selection of an judges, right. Collegium system की अगर बात करें, this consists of CGI, 4 senior most judges होते हैं,
इस पे, राइट। और उनकी जो ओपिनियन होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट मियरली हिज इंडिविजुअल ओपिनियन बट द ओपिनियन फॉर्म बाय कलेक्टिव मैन। जो एपेक्स लेवल पे जुडिशरी के लोग हैं उनकी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होती है, उसी अंडरस्टैंडिंग पे जजेस को अपॉइंट की जाती है, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉलेजियम, दिस इज अ ह्यूजली डिबेटेड टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, राइट। So the independence of judiciary as a part of basic structure of the constitution is very important because this is only important because we have to ensure that rule of law is maintained essentially in the country। और जो democratic system है, जो हमारी democracy की core essence है, जो constitutional की जो core value है, उसको uphold रखा जाए, right। The rule of law has to be upheld, right। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो CGI जो है उन्होंने अपने स्पीच में भी इसके बारे में कहा था कि रूल ऑफ लॉ इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अ पॉसिबल क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी फ्रेम्ड इन रूल ऑफ लॉ एंड आई पर्सनली फील कि एक ऐसे भी आप इस पे पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे के लिए भी आप तैयार रहें। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस की अगर बात करें, दिस हैज टू बी सेव्ड बाय द प्रोविजनल सेलेक्टिंग द बेस्ट अमंग दोज अवेलेबल टू अपॉइंट द जजेस। जो सुपीरियर जुडिशरी है वो कंसल्टेशन करके जो बेस्ट माइंड होती है उनको अपॉइंट करती है, राइट। Thus, by judicial interpretation, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 124 और 214 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावर जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी है वो हायर अथॉरिटीज़ को रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए ये पावर यूज़ करने के लिए उनको एम्पावर करती है सो दैट दे शुड बी इम्पार्शियल इन अपॉइंटिंग एनी जजेस टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। करंट कॉलेजियम सिस्टम की अगर बात करें, एज वी नो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समथिंग विच वुड बी ऑलवेज देयर इन द कमिटी। सो प्रेजेंटली जो NV रमन्ना है, आई एम जस्ट कोटिंग दिस नेम बिकॉज विद दिस नेम यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको जो वो जस्टिस जो जिस जज ने ऑर्डर दिए उसके नाम लिखने होते हैं। सो दैट इज़ द रीजन आई एम स्टेटिंग ऑल द नेम ऑफ द जजेस। सो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस हैं NV रमन्ना, जस्टिस RF नरिमन, जस्टिस UU ललित, Justice AM Khanwalkar और Justice DY Chandrachud. These are some of the brilliant brain in judiciary that we can have in our country, right? Some of the excellent brain, some of the excellent judgment coming from these judges, right? तो ये कॉलेजियम के पार्ट हैं and they together form a formidable force जो कि एक कंसर्वेटिव जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं उसके इम्प्लीकेशंस को समझते हैं और जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं, राइट। सो जुडिशरी इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट मोर ट्रांसपेरेंट बट वी हैव टू इंश्योर कि हाँ जो भी डिसीजन ली जा रही है वो बेस्ट ऑफ द माइंड एंड फॉर द बेस्ट ऑफ द माइंड ली जा रही है, राइट। बेस्ट लोग ले रहे हैं, अच्छे लोगों के लिए ले रहे हैं, राइट। सो दिस इज द करेंट कॉलेजियम सिस्टम इन द सुप्रीम कोर्ट। नाउ सम कंसर्न इंसिस्ट ऑफ बेस्ट सिलेक्शन पैटर्न जो जुडिशरी है दैट इज अमॉन्ग दोज अवेलेबल। कॉम्प्रोमाइज के लिए यहाँ पे भी चांसेस होती है कई बार, बट ऐसे कैंडिडेट को नहीं लाना चाहिए जिसकी एफिकेसी खराब हो और वो उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो हर चीज़ को चेक करके की जानी चाहिए, राइट। सो कैंडिडेट हु लूज इज मैक्सिमम जो एक एसेंशियल एट्रीब्यूट्स अगर नहीं है, सो दीज पीपल शुड नॉट बी अपॉइंटेड। कुछ केसेस फॉल्ट्स हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ भी, कॉलेजियम सिस्टम के साथ भी, बट वी शुड टेक इट वेरी इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। And the framer of constitutions were alive to likely erosion of the judiciary independence। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात हुई थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि दिस इज इनहेविटेबल, कुछ चीज़ें होंगी ऊपर नीचे बट द बेस्ट पार्ट इज दैट वी हैव टू मेंटेन द एसेंस ऑफ जुडिशरी एंड द एसेंस ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। नाउ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की गई है, दिस इज बीइंग लॉन्ग पेंडिंग। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2016 के जजमेंट में ये स्ट्राइक डाउन किया था कि कोई नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की ज़रूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट खुद से इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअप्रूव थी एंड दे हैव सेड दैट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बी देयर in the final selection of the judges in either High Court or in the Supreme Court, right? So Supreme Court has categorically said that they don't want any political interference in the appointment of the judges, right? So the court has noted कि जो reciprocity होती है, feeling of the playback of the political executive should be disastrous for the independence of judiciary. So these are some of the punchline that you can use in your mains answer. So this was all about the discussion of this editorial. Now moving to the MCQs question of the day, and before I proceed with the question, just to tell you the answers of yesterday questions. For the first question, the correct answer is B, and for the second question, the correct answer is C.
Now, MCQs of the day. Making peace with nature has been recently published in which among the following? UNEP, IPPCC, Food Agriculture Organization, World Wildlife Fund for Nature. So what you have to do, you have to choose the correct option and write that in the comment section down below. Second, consider the following statement about the vertical launch short range missiles to air missile system. It is an indigenously developed by DRDO and it is capable of neutralizing various aerial threats that remain in the including scheme targets. So you have to choose the correct option and write that in the comment section down below. So do participate, write your answer in the comment section. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs question. If you have any other suggestion, you can let us know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.